two closely spaced point sources of light of line according to Rayleigh's criteria, two closely spaced point sources of light or lines are said to be just resolved by an optical instrument only if the maxima intensity of the central pattern of one object falls on the first minima of the other and vice versa. ये रिजोल्यूशन यानी क्या होता है कि दैट इज जस्ट रिजॉल्व यानी क्या होता है कि सपोज देयर आर द नंबर ऑफ लाइंस, एक पेज लिया आपने, पेज के ऊपर लाइंस मार्क की, बहुत सारी पैरेलल लाइंस मार्क की। यदि आप दूर से देखोगे ना तो यदि इफ द डिस्टेंस इज सफिशिएंट बिटवीन टू लाइंस तो यू कैन ऑब्जर्व द बोथ द लाइंस सेपरेट लाइंस ऑब्जर्व करोगे। बट इफ दीज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये लाइंस यदि एक दूसरे को बहुत क्लोज है, यदि आप दूर से ऑब्जर्व करोगे लाइंस तो यू विल फाइंड कि दोनों लाइंस, सपोज देयर आर ओनली टू लाइंस ऑन द पेपर, प्लेन पेपर लिया, उसके ऊपर दो लाइंस बने पैरेलल अपने, and these lines are parallel to each other and they are very close. So दूर से यदि आप ऑब्जर्व करोगे ना तो you will find कि एक ही लाइन दिखेगी आपको, you will find only one line. Even though there are the two lines, then you will find only one line, एक ही लाइन दिखेगी आपको. So by using the optical instrument से जब हम देखते हैं इसको, so optical instruments के अंदर भी आपको क्या दिखेगा, एक ही लाइन दिखेगी। बट जब आप सेटिंग करोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस रहता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय नॉब प्रोवाइडेड ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। सो एक ऐसा पोजीशन आएगा कि उस पॉइंट पे आपको दोनों लाइन सेपरेट दिखे, जस्ट सेपरेट हो, जस्ट सेपरेट। बाद में और सेटिंग करोगे तो वेल सेपरेट दिखेगी, बट जिस पॉइंट पे जस्ट सेपरेट दिखेगी उस पॉइंट को बोलेंगे कि नाउ बोथ द लाइंस आर रिजॉल्व। दोनों लाइंस कैसी हो रही है, रिजॉल्व हो रही है, सेपरेट दिख रही है आपको। सो व्हाट इज द रेलिक्स क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? तो रेलिक्स क्या बोलते हैं, इफ टू क्लोजली स्पेस पॉइंट सोर्स है, लाइन की जगह दो सोर्स लिए, पॉइंट सोर्स लिए, या तो फिर दो लाइंस लिए हमने, सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इफ एंड ओनली इफ the maxima of the central pattern of one object, पहली लाइन ने जो मैक्सिमा प्रोड्यूस की उसके साथ सेकेंड लाइन ने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस किया था, सेकेंड लाइन की मिनिमा यदि मैच होती है, if the maxima of the first line and the minima of the second line coincide with each other, then we can say that both the lines are just resolved, यानी जस्ट सेपरेट हुई दोनों लाइन्स, ऐसा बता सकते हैं। सो दिस क्राइटेरिया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द रेलिक्स क्राइटेरिया। सी ये डायग्राम के अंदर बताता हूं। सी दिस इज द सोर्स, दिस इज द मैक्सिमा, ये दिस इज द मैक्सिमा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फर्स्ट सोर्स और फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज द मैक्सिमा प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन ने मैक्सिमा जो प्रोड्यूस की वो ये डॉटेड लाइन से बताया, और ये लाइन से जो मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रही है वो डार्क लाइन से बताया। सो दिस इज द मैक्सिमा प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द फर्स्ट सोर्स और फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज द मैक्सिमा प्रोड्यूस बाय द सेकंड लाइन सोर्स। जो सेकंड लाइन सोर्स था उसने जो प्रोड्यूस किया डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसका मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ रेलिक्स क्या बता रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट पैटर्न है ना, पहली लाइन ने जो प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रोड्यूस की उसके साथ सेकेंड लाइन का, यानी सेकेंड लाइन सोर्स जो था उसका मिनिमा यदि कोइंसाइड होता है, देखो सी दिस इज द मैक्सिमम ऑफ सेकेंड सोर्स और दिस इज द मिनिमा ऑफ द सेकेंड सोर्स। सेकेंड सोर्स का मिनिमा और फर्स्ट सोर्स का मैक्सिमा दोनों कोइंसाइड हो रहे, एक ही जगह पे क्यू पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, एट पॉइंट क्यू द मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट सोर्स, मैक्सिमा ड्यू टू फर्स्ट सोर्स एंड मिनिमा ड्यू टू सेकेंड सोर्स, दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, दे आर कोइंसाइड्स, द मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड द मिनिमा ऑफ सेकेंड सोर्स कोइंसाइड विद ईच अदर। इस टाइप से यदि कोइंसाइड होता है मैक्सिमा पहली लाइन का और मिनिमा दूसरी लाइन का,
So we can say that both the lines are just resolved. दोनों line just separate. This is called as the Rayleigh's criteria. Or vice versa. When the maxima of the second source lies with the coincides with the minimum of the first source. देखो ये minimum first source का Q1 point. Minimum of first source and the maximum of first second source are coinciding here at point Q1. So इस टाइप से जब होता है तो we can say that both the lines are just resolved. दोनों लाइन just separate की इंस्ट्रूमेंट में सेटिंग कर रहे हैं आप. स्टार्ट में आपको एक ही लाइन दिख रही थी बट आपने सेटिंग करने के बाद जस्ट दोनों भी लाइन सेपरेट दिख रही है. So at that time the maximum of the first line coincides with the minimum of the second line and vice versa. This criteria is called as the Rayleigh's criteria. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Now we are going to find out the resolving power of grading. Grading का resolving power हम find out करेंगे. So first, what is meant by the resolving power of grading? So the resolving power of grading is defined as the ratio of wavelength of any spectral line having wavelength lambda. ना एक spectral line लिया मैंने, उसका wavelength कितना है? Lambda इतना है. To the difference in the wavelength between this line and neighboring line. Neighboring line का wavelength कितना है? Lambda plus d lambda. Neighboring line का wavelength lambda plus d lambda. पहली लाइन जो थी, जो लाइन कंसीडर कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना? लैम्बडा. So the resolving power of grading is defined as the ratio of wavelength of any spectral line. Wavelength of any spectral line. What is the wavelength of that spectral line? Lambda. यानी ऊपर के साइड लैम्बडा डिवाइड बाय difference between the wavelength of that spectral line and its neighboring spectral line. उसके बाजू में जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसका वेवलेंथ और पहली लाइन का वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ का डिफरेंस. दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द कब लेने का रेशियो? व्हेन द टू लाइंस अपीयर टू बी जस्ट रिजॉल्व. जब दोनों लाइन जस्ट रिजॉल्व होती है, व्हेन द टू लाइंस आर जस्ट रिजॉल्व, देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन डिवाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइन एंड इट्स नेबरिंग लाइन. वो लाइन और उसके बाजू की जो लाइन है उसके वेवलेंथ का डिफरेंस, उससे डिवाइड करने का ऊपर की पहली लाइन के वेवलेंथ को. तो दैट इज कॉल्ड एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेडिंग. सो व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेडिंग? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन? दैट इज लैम्बडा. जैसे कि टू द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ नेबरिंग लाइन एंड दैट लाइन. नेबरिंग लाइन का वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा. इसका डिफरेंस क्या होगा? lambda plus d lambda minus lambda. That is lambda get cancelled, d lambda बचे. What is d lambda? D lambda is the difference between the wavelength of that line and its neighboring line. So this ratio lambda divided by d lambda, it is called as the resolving power of grading. कब लेने का रेशियो? When the two lines are just resolved. जब दोनों भी लाइन just resolve होती है तो उस टाइम आपको रेशियो लेना है wavelength of particular line divided by difference between the wavelength of that line and its neighboring line. उसके बाजू की लाइन और वो लाइन के बीच का wavelength का difference, that is d lambda. So we have got a first equation, that is the resolving power of grading equal to lambda divided by d lambda. So ये जो equation है resolving power का, that is lambda divided by d lambda. By using this equation we can define the definition. ये equation के ऊपर से आप definition लिख सकते हो. The resolving power of grading is defined as the wavelength of any spectral line to the, it is the ratio of the wavelength of any spectral line to the difference between the wavelength of that spectral line and its neighboring spectral line. This, when both the lines are just resolved. This ratio is called as the resolving power of grading. Do you understand up to this? Yes, sir. Yes, sir. Now, how to calculate the resolving power of grading? So, diagram जो दिया है, diagram के ऊपर से explanation करेंगे. What is the diagram? Consider the grading surface LM. What is this? LM is the grading surface. Having the n number of slits. कितनी slits है grading के अंदर? n number of slits. XY is the field of view of the telescope.
ये जो स्क्रीन दिख रही है यानी क्या है, फील्ड ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के दिखने के टेलीस्कोप टेलीस्कोप के आईपीस में से जब देखोगे जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ टेलीस्कोप यानी स्क्रीन। Q is the n principal maxima of spectral line of wavelength lambda. लैम्बडा इतनी वेवलेंथ का जो लाइन था उसका स्पेक्ट्रल लाइन, उसका जो प्रिंसिपल मैक्सिमा जो था दैट इज डिनोटेड बाय Q। Q पॉइंट पे बताया कौन सी प्रिंसिपल मैक्सिमा, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा। व्हाट इज द डिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर दिस प्रिंसिपल मैक्सिमा? द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर दिस nth principal maxima is theta n। theta n से angle of diffraction। Q1, what is Q1? Q1 is the n principal maxima of spectral line, neighboring spectral line। Q1 is the n principal maxima due to the its neighboring spectral line। जो पहली लाइन ली थी उसके neighboring spectral line की वजह से nth नंबर की principal maxima। उसका वेवलेंथ कितना है? बाजू में जो लाइन है उसका वेवलेंथ कितना? दैट इज लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन? दैट इज थीटा एन प्लस डी थीटा एन। थीटा एन ये देखो, ये टोटल एंगल यदि लिया ऐसे ही आता तो कितना होगा? थीटा एन प्लस डी थीटा एन। थीटा एन प्लस डी थीटा एन इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसके साथ एंगल लेते, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डी थीटा एन। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, दैट इज डी थीटा एन। Now, we know the condition for principal maxima। principal maxima ग्रेटिंग के अंदर कंडीशन हमने देखी। What is the condition for principal maxima? That is a plus b sin theta equal to n lambda। a plus b sin theta equal to n lambda। This is the condition for principal maxima। Already we know that the condition for principal maxima in case of diffraction grating is a plus b sin theta equal to n lambda। Now here we are going to add what is theta here for the first line। कौन सी लाइन कंसीडर कर रहे हैं हम? फर्स्ट लाइन, ये डार्क वाला स्पेक्ट्रम कंसीडर। सो डार्क लाइन के लिए क्या होगी कंडीशन? a प्लस बी साइन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हियर? थीटा की जगह पे थीटा n, so we'll replace theta by theta n। so the condition becomes a plus b sin theta n equal to n lambda। this is the equation number 2। ये जो पहली लाइन है उसकी वजह से जो मैक्सिमा मिल रही है आपको n नंबर की मैक्सिमा, उसके लिए कंडीशन हमने फाइंड आउट किया। व्हाट इज द कंडीशन? जनरल कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। फॉर दिस, इन दिस केस, फॉर दिस लाइन, ये लाइन के लिए क्या बनेगी? दैट इज a प्लस बी साइन थीटा n बिकॉज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा n। nth मैक्सिमा कंसीडर किस लिए कर रहे हैं इसलिए n लिखा है, सफिक्स से उसको कोई मतलब नहीं। equal to n lambda। Yes, sir. Do you have any problem up to this? No. Now, similarly, the n principal maxima of wavelength lambda plus d lambda is। अभी सेकेंड, ये जो डॉटेड स्पेक्ट्रम है उसके लिए हम प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। जनरल कंडीशन वी नो दैट a plus b sin theta equal to n lambda। So a plus b जैसे के वैसे, what is the angle of diffraction for the second line? Theta n plus d theta n। So we have replaced theta by theta n plus d theta n। And what is the wavelength for the second spectral line? That is lambda plus d lambda। lambda plus d lambda। So we'll replace lambda by lambda plus d lambda। So equation becomes a plus b sin in bracket theta n plus d theta n equal to n in bracket lambda plus d lambda। This is the equation number 3। Do you have any problem up to the equation number 3? No, sir. So what is this equation 2? Equation 2 is the condition for condition for n principal maxima of wavelength lambda। lambda यानी dark वाला। And what is this? This is the condition for principal maxima due to the second spectral line, dotted line, having wavelength lambda plus d lambda। Okay। These two lines will appear. These two lines will appear just resolve if the angle of diffraction angle of diffraction theta n plus d theta n also corresponds to the
डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमम ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। हम कब बोलेंगे कि दोनों लाइन जस्ट विजुअल है? जब ये वाला एंगल यानी Q1 का एंगल कितना है? एट Q1 व्हाट इज द एंगल? थीटा एन प्लस डी थीटा एन। एंगल थीटा एन प्लस डी थीटा एन यानी Q1 पॉइंट का एंगल, जो भी ये लाइन यानी ये वाली लाइन, ये जब मिनिमा का पोजीशन बता रहा है, इट विल कोइंसाइड्स, ये फर्स्ट लाइन का मिनिमा है और ये सेकेंड लाइन का प्रिंसिपल मैक्सिमा। Q1 इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट सेकेंड लाइन एंड द मिनिमा ऑफ फर्स्ट लाइन। सो क्या लिख रहे हो? These two lines will just appear resolved. ये just separate कब दिखेगी दोनों lines? If the angle of diffraction theta n plus d theta n also corresponding to the direction of first minimum of wavelength lambda. ये जो एंगल था प्रिंसिपल मैक्सिमा का, सेकेंड लाइन का प्रिंसिपल मैक्सिमा का, ये कोइंसाइड होगा फर्स्ट लाइन के मिनिमा के साथ। तो हो रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ये देखो ये मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा आ रहा है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन का मैक्सिमा आ रहा है, दोनों भी कोइंसाइड हो गए। सो आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। नाउ वी नो द कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए कंडीशन, अभी तक हमने मैक्सिमा की कंडीशन देख रहे थे। नाउ वी नो द कंडीशन फॉर मिनिमा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा? a plus b sin theta equal to n lambda divided by capital N. This is the condition. Here the पहली लाइन के लिए मिनिमा की कंडीशन ले रहे हैं हम, जो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है पहली लाइन की कंडीशन? यहाँ पर Q पॉइंट पे फर्स्ट लाइन का मिनिमा आ रहा है। सो हियर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, द फर्स्ट लाइन का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना है? थीटा एन है। द फर्स्ट लाइन का भले मिनिमा आ रही है यहाँ पे, बट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कंसिडर होता है। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना है? थीटा एन है। सो विल राइट हियर द कंडीशन बिकम्स a plus, the condition becomes a plus b sin थीटा की जगह थीटा n लिखेंगे हम, sin थीटा की जगह sin थीटा n इक्वल टू n लैम्बडा डिवाइडेड बाय n। फर्स्ट लाइन का जो मिनिमा था उसकी कंडीशन क्या बनेगी? a plus b sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा डिवाइडेड बाय n। दिस इज जनरल कंडीशन। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू मेक वन चेंज, इंस्टेड ऑफ थीटा यू हैव टू राइट डाउन थीटा n। नाउ फॉर द फर्स्ट मिनिमा, हम कौन सी मिनिमा देख रहे हैं यहाँ पे? ये जो डार्क वाला स्पेक्ट्रम में उसका फर्स्ट मिनिमा, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। सो फॉर फर्स्ट मिनिमा n इक्वल टू 1, फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे हम। सो द इक्वेशन बिकम्स a plus b sin theta n इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय n। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अप टू द इक्वेशन नंबर 4? No, sir. Therefore, we can write the condition of first minima for the wavelength lambda at diffraction angle theta n plus d theta n is, ये जो मिनिमा आ रही है फर्स्ट लाइन की वजह से, यहाँ पे एक्चुअल एंगल कितना हो रहा है? थीटा एन प्लस डी थीटा एन आ रहा है। कौन सी लाइन ले रहा हूं मैं? ये वेवलेंथ कितना है इसका? लैम्बडा। लैम्बडा वेवलेंथ के लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मिनिमा वी हैव गॉट द कंडीशन दैट इज a plus b sin theta n इक्वल टू फॉर फर्स्ट मिनिमा लैम्बडा डिवाइडेड बाय कैपिटल N। इस टाइप से मिला। बट यहाँ पे एंगल कितना तैयार हो रहा है? यहाँ पे एंगल तैयार हो रहा है थीटा n प्लस डी थीटा n। सो इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल वी कैन राइट दिस कंडीशन। इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, यहाँ पे जो एंगल तैयार हो रहा है उस एंगल के टर्म्स में हम कंडीशन लिख सकते हैं। व्हाट इज द एंगल? थीटा n प्लस डी थीटा n। सो द कंडीशन becomes a plus b sin, instead of theta n I will write here theta n plus d theta n equal to n lambda plus lambda divided by n lambda divided by lambda, क्योंकि वहां पे दूसरी जो पोजीशन है, लिसन केयरफुली, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये जो एंगल था, इस एंगल पे इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है, सेकेंड लाइन का प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है? एन लैम्बडा। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन थी? एन लैम्बडा। तो यहाँ पे ये सेकेंड लाइन का प्रिंसिपल मैक्सिमा भी आ रहा है और फर्स्ट लाइन का मिनिमा आ रहा है। सो दैट कंडीशन वी कैन राइट दैट कंडीशन इन दिस वे, दैट इज एन लैम्बडा प्लस कंडीशन ऑफ मिनिमा दैट इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय एन, लैम्बडा डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये कैसे आया? सो दिस इज प्रिंसिपल मैक्सिमा भी मैच हो रहा है, वहां पे आ रहा है। सो दैट्स व्हाई एन लैम्बडा प्लस
lambda divided by n. So the condition becomes a plus b sine theta n plus d theta n equal to n lambda plus lambda divided by n. Now this is the equation number 5. Now we'll compare equation 3 and 5. This is the equation number 3. See the left hand side. Left hand side क्या है? Equation number 3 का a plus b sin theta n plus d theta n. Equation number 5 का left hand side a plus b sin in bracket theta n plus d theta n. दोनों को left hand side same है. So we can compare the right hand side. Right hand side compare कर सकते हैं. So we can write n in bracket lambda plus d lambda equal to right hand side of equation 5, that is n lambda plus lambda divided by n. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. the n lambda ये ब्रैकेट सॉल्व किया. we have got n lambda plus d n d lambda and so on. n lambda get cancel. यहाँ पे क्या बचा? n d lambda equal to lambda divided by n. रीअरेंज किया इसको. d lambda इस साइड में लिया, n इस साइड में लिया. so it will become lambda divided by d lambda equal to n, where n is the integer and capital N is the number of slits. This is the order of spectrum. Small n is called as the order of spectrum. Capital N is called as the number of slits. So what is lambda? The ratio, the wavelength of the first spectral line divided by the difference between the wavelength of first spectral line and its neighboring spectral line, that is d lambda. So lambda divided by d lambda is equal to n into capital N. So that is, this ratio is called as resolving power. So we have got the equation for resolving power of grating, that is resolving power equal to n into capital N. We have got the equation resolving power equal to n into capital N. So this is the derivation for resolving power of grating. Grating के resolving power के लिए derivation यहाँ पे हमने solve किया. It's not very hard derivation. It's very easy and simple derivation. So you should remember only the two things. What is Rayleigh's criteria of resolution? According to Rayleigh's criteria, the two lines are, we can say that the two lines are just resolved when the maxima due to first line coincides with the minimum of the second line, and vice versa. So this is Rayleigh's criteria. Then we studied about the resolving power of grating. So what is the resolving power of grating? The resolving power of grating is nothing but the ratio of wavelength of the first line to the difference between the wavelength of first line and its neighboring line when two lines are just resolved. This ratio is called as the resolving power. Then derivation लिया हमने resolving power find out करने के लिए grating का. So in this way we can solve. कुछ नहीं किया हमने, conditions यूज की. Conditions के अंदर थीटा की वैल्यूज वगैरह पुट अप की, लैम्डा की वैल्यूज वगैरह पुट अप की, and finally we have got, after calculation we have got the equation for resolving power of grating, that is n into n. Small n is called as the order of spectrum and capital N is called as the number of slits. So resolving power of grating depends upon the number of slits. If the number of slits increases, then resolving power also increases. Do you have any problem up to this? No, sir. Then next. The last topic, the resolving power of telescope. कंटिन्यू करूं या नेक्स्ट लेक्चर में लूं रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, या कंफ्यूज हो जाओगे आप दोनों रिजोल्विंग पावर के अंदर? सर कंटिन्यू कीजिए ना सर, फिर कल भी करवा दीजिएगा, अभी करवा दीजिए. हेलो सर. हाँ हॅलो सर, तू पहिला परत सांगा ना एकदा प्लीज सर. ये मेरे नोट्स के अंदर ये भी था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, बट जनरली नहीं है आपके सिलेबस में, बट देन आल्सो आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज डिस्पर्सिव. So we have started from here, Rayleigh's criteria for resolution, hence obtain an expression for resolving power of grating. According to Rayleigh's criteria, two closely spaced point source, line की जगह source भी ले सकते हैं, point source भी ले सकते हैं. So when the
the two lines or the 2 point source are said to be just resolved by an optical instrument when the maxima of the first line coincides with the minima of the second line और वाइस वर्सा. एक लाइन का मैक्सिमा दूसरी लाइन के मिनिमा के साथ यदि कोइंसाइड होता है तो वी कैन से दैट दोनों भी लाइन सेपरेट दिखेगी आपको, जस्ट सेपरेटेड. टू लाइंस आर जस्ट सेपरेटेड. नाउ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जस्ट मैंने रिपीट किया अभी. The resolving power of grating is defined as the ratio of wavelength of first line to the difference between the wavelength of first line and its neighboring line when two lines are just resolved. जब दोनों लाइन जस्ट सेपरेट होती है उस टाइम पे यदि ये रेशियो लिया मैंने वेवलेंथ का, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड इट्स नेबरिंग लाइन, so we'll get the resolving power of grating. That ratio is called as the resolving power of grating, and the resolving power of grating is given by lambda divided by d lambda. This is equation number 1. Now here is the derivation. जो रेलिक्स क्राइटेरिया के अंदर देखा वो ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है. दिस इज द मैक्सिमा ड्यू टू द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन का मैक्सिमम डार्क लाइन से जो होता है, सेकेंड लाइन का जो स्पेक्ट्रम है मैक्सिमा वगैरह उस डॉटेड लाइन से बनता है. सो यह फर्स्ट लाइन का मैक्सिमा सेकेंड लाइन के मिनिमा के साथ कोइंसाइड हो रहा है, यानी रेलिक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है. मींस वी कैन से दैट बोथ द लाइंस आर जस्ट रिजॉल्व, बोथ द लाइंस आर जस्ट सेपरेटेड. दोनों भी लाइन सेपरेट दिखेगी. यदि आप इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करोगे दोनों लाइंस तो दोनों लाइंस इस पोजीशन में सेपरेट दिखेगी अकॉर्डिंग टू रेलिक्स क्राइटेरिया. रेलिक्स क्राइटेरिया बोलता है कि इस टाइप से यदि कोइंसाइड होता है एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा तो दोनों लाइन सेपरेट दिखती है, जस्ट सेपरेट दिखती है. और वाइस वर्सा मींस द मैक्सिमा ऑफ सेकंड लाइन एंड मिनिमा ऑफ फर्स्ट लाइन कोइंसाइड हो रहा है, तो वी कैन से दैट बोथ द लाइंस आर जस्ट रिजॉल्व. The angle of diffraction for the first line is theta n. Angle of diffraction for second line is d theta n, not d theta n. d theta n plus d theta n. ये पूरा एंगल मेजर करेंगे हम. That is theta n plus d theta n. Then d theta n is the difference between the angle of diffraction of both lines. दोनों लाइन के बीच में का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का डिफरेंस. तो एक ग्रेटिंग लिया, नोटेशन दिया उसको LM. This grating consists of n number of slits. The angle of diffraction for the first line is theta n. Angle of diffraction for second line is the theta n plus d theta n. The wavelength of first line is lambda. The wavelength of second line is lambda plus d lambda. Now we know that the condition for maxima, condition for maxima in case of diffraction grating is a plus b sin theta equal to n lambda. So here we are going to apply this condition for the first line. फर्स्ट लाइन के लिए अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट लाइन? दैट इज थीटा n. सो विल रिप्लेस थीटा बाय थीटा n. थीटा की जगह थीटा n लिखेंगे. तो वी हैव गॉट द कंडीशन फॉर द nth प्रिंसिपल मैक्सिमा, बिकॉज़ वी डोंट नो कौन से नंबर का प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो nth नंबर की प्रिंसिपल मैक्सिमा है. और क्या मिला आपको उसके लिए कंडीशन? a plus b sin theta n equal to n lambda. Now similarly, now we are going to find out the condition for maxima, nth principal maxima of second line. ये जो dotted line है उसका nth principal maxima का condition हम find out करेंगे. So here what is the angle of diffraction? That is theta n plus d theta n. This is the angle of diffraction, theta n plus d theta n. And what is the wavelength? Wavelength is lambda plus d lambda. इसका wavelength कितना है dotted line का? Lambda plus d lambda. So by using this condition we have to replace theta n की जगह पे क्या लिखेंगे हम? theta n plus d theta n. lambda की जगह क्या लिखेंगे? lambda plus d lambda, because the wavelength of second line is lambda plus d lambda. So this is the condition for principal maxima due to the second line. This is the equation number 3. According to Rayleigh's criteria, these two lines will appear just resolved, just separated, if the angle of diffraction theta n plus d theta n also corresponds to the direction of first minima of wavelength lambda. ये जो एंगल था सेकेंड मैक्सिमा का एंगल कितना है? थीटा n प्लस डी थीटा n. ये एंगल जब फर्स्ट के मिनिमा का, फर्स्ट का मिनिमा यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट का मिनिमा, ये एंगल के साथ जब मैच होगा तब वी कैन से दैट बोथ द लाइंस आर जस्ट रिजॉल्व. व्हेन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द
maxima, principal maxima and principal maxima of second line coincides with the angle of diffraction, the angle of diffraction for the first minima of the first line. First line का first minima के लिए same angle आएगा, maxima का angle और minima का angle same आएगा. So we can say that the both the lines are just equal. We know that the condition for minima के लिए condition, what is general condition of minima? ग्रेडिंग के अंदर हमने पढ़ा a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा डिवाइडेड बाय कैपिटल N. सो हियर ये जो लाइन थी, ये जो पहली डार्क लाइन है, इसका मिनिमा यहाँ पे आ रहा है. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस मिनिमा? एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन यही लेंगे हम थीटा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस लाइन, इस लाइन का मिनिमा. सो द कंडीशन बिकम्स a प्लस बी साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा n लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा, इस टाइप से लिखेंगे हम. नाउ फॉर द फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे हम, बिकॉज हियर इज द फर्स्ट मिनिमा, दिस इज प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके बाजू में जो आएगी दैट इज द फर्स्ट मिनिमा. सो फॉर फर्स्ट मिनिमा n इक्वल टू 1 पुट अप किया हमने. सो इक्वेशन बिकम्स लैम्बडा डिवाइडेड बाय n ओनली, n की वैल्यू 1 पुट अप किया. वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 4. Now, therefore, we can write the condition of first minima for the wavelength lambda at diffraction angle theta n plus d theta n. First, we can write the condition of first minima के लिए condition लिखेंगे हम for the wavelength lambda at diffraction angle. यानी मैंने कौन से डिफ्रेक्शन एंगल के लिए कंडीशन फाइंड आउट किया? फर्स्ट मिनिमा का, ये थीटा एन के लिए फाइंड आउट किया. बट मिनिमा के वहां पे एंगल कितना तैयार हो रहा है? थीटा एन प्लस डी थीटा एन, ये वाला एंगल तैयार हो रहा है. सो इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल वी कैन राइट, ये एंगल के टर्म में मिनिमा के लिए कंडीशन कैसे लिखोगे आप? सो इस टाइप से वी कैन राइट द कंडीशन दैट इज a प्लस बी साइन. हाँ, लिसन मी केयरफुली, आपका क्या गलत हो रहा है? अब वेवलेंथ कौन सी कंसिडर कर, यही वेवलेंथ कंसिडर करो, वेवलेंथ लैम्बडा कंसिडर करके इस एंगल के लिए वेवलेंथ लैम्बडा है, बट कंडीशन ये एंगल के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ. एक्चुअली मिनिमा के लिए कंडीशन है ऐसा, जो एंगल तैयार हो रहा है मिनिमा के लिए उसके उस हिसाब से कंडीशन नहीं फाइंड आउट करते, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन लेके कंडीशन फाइंड आउट करते, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया दिस वन. एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन लेके कंडीशन फाइंड आउट करते, ये मिलता है, इस टाइप से फाइंड आउट करते. बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मिनिमा के साथ जो एंगल तैयार हो रहा है, मिनिमा के लिए जो एंगल तैयार हो रहा है, उस एंगल को लेके कंडीशन फाइंड आउट कर रहा हूं. तो राइट हैंड साइड भी चेंज होती है, राइट हैंड साइड भी चेंज होगी. सो आई होप मिनिमा का जो एंगल है वो एंगल कितना है? थीटा एन प्लस डी थीटा एन. तो ये जो इक्वेशन था इसके अंदर मैंने एंगल डाला थीटा एन प्लस डी थीटा एन. सो अब भी यहाँ पे ये वाला टर्म्स आपको यहाँ पे लिखते समय ये जो लैम्बडा डिवाइड बाय एन था वो जैसे के वैसे लिखा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड लाइन का मैक्सिमा भी आ रहा है, सेकंड लाइन का मैक्सिमा भी आ रहा है. तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन रहती है? एन लैम्बडा. सो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसको कि उस एंगल के लिए मैक्सिमा भी आती है सेकेंड लाइन की. सो व्हेन आई कंसिडर दिस एंगल when writing the condition for minima due to the wavelength lambda means first line, so I don't write down that is lambda divided by n. So यहाँ पे कुछ तो भी ऐड करना था, तो मैंने n lambda ऐड किया. So condition becomes a plus b sin theta n plus d theta n equal to n lambda plus lambda divided by n. Listen me carefully, wavelength नहीं change कर रहा हूँ मैं, सिर्फ angle of diffraction change कर रहा हूँ. So actually this condition is okay for minima, but मिनिमा के ऊपर जो एंगल तैयार हो रहा है, बाय टेकिंग दैट एंगल वी कैन राइट दिस कंडीशन इन दिस. आपको नहीं समझ में आया तो ये याद रख लो, ये वाली स्टेप याद रखना है आपको कि वेवलेंथ वही ले रहा हूं बट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन चेंज कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड के अंदर एन लैम्बडा ऐड करना है. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. नाउ वी कैन कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट इज a प्लस b दिस एंड दिस. So right hand side को compare करेंगे, this side equal to this side. So we have got this equation, ये equation मिला, ये जो ब्रैकेट था इसको n से मल्टीप्लाई किया, we have got n लैम्बडा प्लस n d लैम्बडा, ये साइड जैसे के वैसे n लैम्बडा गेट कैंसल,
here I have got the n d lambda equal to lambda divided by n. इसको रीअरेंज किया, ये डी लैम्बडा जो था इस साइड में लेके गए, एन जो था इस साइड में लेके गए. आई हैव गॉट द रेशियो लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी लैम्बडा इक्वल टू एन इनटू कैपिटल एन. दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द रिजॉल्विंग पावर. अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू एन इनटू कैपिटल एन. ये जो फॉर्मूला, इसके पूरे एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह है तो आपको लिख के आना चाहिए. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्लिट्स. Resolving power of grading is also depends upon the order of spectrum. कौन से नंबर का मैक्सिमा मिनिमा आप कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड्स कर. So I think this is sufficient for today. Next lecture we will continue with resolving power of telescopes. सर हाँ बोल. सर एक क्वेश्चन है सर.